We are burning our hands with silencer. Frozen. There was a block on Baralachala top, and we were stuck there for about 2 hours, standing like this, moving little, and we were feeling so cold and frustrated. It's a life-threatening condition. This truck driver came just in front of me and applied hard brake. I don't know whether he was sleeping or doing what. He wanted to crush me. We have little bit of argument with him, and just went away because it was dangerous for me. Good morning, guys. Today is 21st day of our Ladakh ride, and we have started our return journey of this ride. We stayed somewhere near Pang. It is very cold out here. You can see on seat, this is ice. Our seats are frozen. Ice is there. As the temperature in the night was around -4 or -5 degree, but morning is sunny and bright. Weather is looking clear, so we hope that Barachala will be open and we will cross it in time and reach to Kelong or Jispa or Manali. Let's see, depending on the condition of road and blockage. You can see the snow peak in front of this. Some other riders from Tamil Nadu also stayed in the same hotel. They are also going back to Manali after completing their Ladakh ride. After crossing few high mountain passes, now we are going towards Sarchu, and in Sarchu only we will come to know whether they are allowing us to go further or we have to stay there. We are not seeing many bikes or trucks coming from this direction, so it is likely that road is not fully open. अभी जाके देखते हैं वहाँ पे, शायद ये पहाड़ निकलने के बाद में हम सरचू के नज़दीक पहुँच जाएंगे और पता चलेगा। आज का दिन हमने मालूम किया था पीछे से, वो दिन है मनाली से लेह आने के लिए। तो आज जो गाड़ियाँ आएंगी वो मनाली साइड से छूटेंगी और ले जा रही होंगी, और इस साइड से जाने वाली गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा होगा। तो हो सकता है उन सब गाड़ियों को इन्होंने चेक पोस्ट पर रोक के रखा होगा। वो जाने के बाद पता चलेगा हमें कि क्या सिचुएशन है। बट मेरे को किसी ने बताया कि वो बाइक वालों को नहीं रोकते हैं जब तक कि रोड स्लिपरी ना हो और रोड के ऊपर ज़्यादा स्नो ना हो। बाइक वालों को दोनों साइड से जाने देते हैं। देखते हैं हमारा क्या लक है। सो फार not so much of inconvenience because of blockage. Only 2 hours, 3 hours we stopped at Khardungla. That's all. Otherwise, we were lucky to go through the Zojila, which was also closed. Pass altitude 17,482. Very cold, freezing cold. Tilangla Pass. Snow everywhere. Very cold. We are ये देखो burning our भाई इस silencer हाथ गर्म करने में लगे हुए हैं। ये दूसरा पास है।
और जो हम क्रॉस कर चुके हैं। और कितने सारे ऐसे पासेज हैं जो हमको रास्ते में मिले, हमें उनके नाम भी अभी शायद पता नहीं है, कोई बोर्ड भी नहीं दिखा। जहाँ बोर्ड दिखा हम लोग वहाँ रुके। 2 जगह हमें ये बोर्ड दिखे थे, तलांगला और लाचुंगला। And if you like to see how I'm dressed, oh, like this, very तो अभी हम सरचू के पास पहुंचने वाले हैं। पहले सरचू विलेज या टाउन जो भी आप बोलो वो आएगा। ट्रक देखो यहीं से रुके हुए हैं, मतलब ये कल जाएंगे यहाँ से, आज तो नहीं जाएंगे। और मुझे लगता है अभी सरचू 8-10 किलोमीटर होगा और ये तब से इतना लंबा ये ब्लॉकेज किया हुआ है। कितना सारा सामान और ट्रक्स अभी लोड हैं, यहाँ सब खड़े हुए हैं। यहाँ तो रहने की भी दिक्कत हो रही होगी। हाउ पीपल आर staying, those who are in car, because those who are in truck they will sleep in truck, but the people who are with family in cars they really will have a tough time। नज़दीक में आ गए हम सरचू के। यहाँ पर भी हमारा चेकिंग होगा, क्या बोलते हैं देखते हैं। यहाँ शायद लाइट व्हीकल और बाइक को नहीं रोका है और वो लगता है एंट्री के बाद हमको जाने देंगे। तो जैसे हमने सोचा था उन्होंने हमको छोड़ा आगे, और हम लोग अभी अगली चेक पोस्ट जो कुछ देर में आएगी, जो 12 लाचा जहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर होता है, वहाँ तक हमको अभी और जाने देंगे और वहाँ पे देखते हैं एक्चुअल सीन क्या है। ये ब्रिज पास करके हम लोग यहाँ से गए। कुछ गाड़ियाँ हमको दिख रही थी जो आ रही हैं, और ये सब देखो रोक रखा है उन्होंने, बाइकर्स को जाने दे रहे हैं। इवन प्राइवेट कार्स आर स्टॉप्ड, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि आज यहाँ से जाने का दिन ही नहीं है। और अगर वो इनको छोड़ेंगे तो ऊपर ये जाके ब्लॉक करेंगे। बोथ वे ट्रैफिक नॉट पॉसिबल, रोड इतना नैरो है और अभी तो 1 वे ही चल रहा है। तो यहाँ पर फिर हमारा एंट्री होगा और हमको बताएंगे कि हमने जाना है कि नहीं जाना है। बात मैं उनसे कर रहा था तो बाद में उन्होंने बोला कि आप लोग धीरे धीरे करके जाओ, जल्दबाजी में नहीं जाना और संभाल के गाड़ी चलाना है। तो हम लोग फिर आगे उन्होंने बोला कि आप जाओ। तो आज हमको रास्ते में रुकने का टाइम ही नहीं मिला, तो लंच भी नहीं हुआ आज का। हम सोच रहे थे कि सरचू में लंच करेंगे, बट हमने पहले सोचा कि भाई यहाँ से निकल लो, पहले चेक पोस्ट से निकल लो, अगर लेट हो गए तो शायद वो हमको आगे के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो हमने कहा पहले हम जाएंगे, चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे, बाद में लंच कहीं मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो देखा जाएगा। तो ये हम लोग अब 12 लाचा की तरफ बढ़ चुके हैं। वहाँ से कुछ कुछ ट्रक्स अभी आना शुरू हुए हैं, इसका मतलब है कि ब्लॉक खुला है और ट्रक्स अभी आना शुरू हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ पर कितने सारे ट्रक एक के बाद एक खड़े हुए हैं और वो सब ऊपर से ही आ रहे हैं धीरे धीरे। उनसे बात करेंगे अगर मौका मिला तो, ट्रक वाले क्या बोलते हैं कि कैसा सीन है वहाँ पे। और शुरुआत तो हो चुकी थी 12 लाचा चढ़ाई की, तो वहाँ से पानी, स्नो, स्केटिंग, वेट रोड, ये तो सब आम बात था। अब तो हम एकदम एक कर कर के सारा कुछ पक चुके थे, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि ये कैसा रोड है क्या है, बस जाना है और तो जाना है। ये बस ड्राइवर वाज वेरी कंसिडरेट, ही गेव अस साइड टू come out because it was only a small place for truck, but they let us go. They know that bikers unnecessarily will block the road, so let them go. It's better for them also and for us also.
but yeah, we have to respect each other and give way so that safely we can cross. But some drivers are not giving at all any side. Here you can see on the left side is such a beautiful फ्रोजन लेक है, और देखो अभी भी इतना ठंडा है कि पिघल नहीं रहा है पानी। हम लोग बहुत सरप्राइज्ड हैं कि हमको वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा नहीं मिली। इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दोज वाटर, मे बी दे वर स्लिपरी एंड ऑल दोज थिंग, दैट अ डिफरेंट इशू, बट दे वर नॉट सो मच टू डिफ़िकल्ट टू नेगोशिएट, जस्ट बिकॉज कि अभी तक स्नो चालू है। हमको रास्ते में कई बार स्नोफॉल मिला, तो ये पिघलेगा कहाँ से? टेम्परेचर इज़ नॉट गोइंग अप, तो पानी पिघलेगा कैसे? पानी पिघलेगा नहीं तो वाटर स्ट्रीम कैसे बढ़ेगा? हम लोग चले, देखो अब कितना मोटा मोटा परत जो है बर्फ़ का जमा हुआ है। और आई कैन सेफली टेल आफ्टर विजिटिंग फॉर दिस 21 days till now in Ladakh region that we found the maximum snow on Baralachala Pass. Even Jojila we had not so much snow. Then we went to Janskar Valley. Pensila was having not so much. Sinkula was having not so much. Khardungla, all other small passes. No one having this much of snow which Baralachala is having. I don't know why this place is so much into snow, and still it is snowing, and BRO people has to work day and night to maintain and keep this road in functional condition. अरे बाबा बहुत स्लिपरी है ये, तो मेरे को तो बहुत तकलीफ़ हो रहा था। बट मेरी बाइक एक्सपल्स जो है उसके टायर्स अच्छे हैं, नई बाइक है, सो फिर भी मैं कंफर्टेबल था। मुझे डर लगता था दोज पीपल हु आर ऑन पल्सर और दिस FG, some person was on CBZ also, and even Royal Enfield Classics, they are not having good enough tires, they are skidding. KTM definitely will not have a good tire, and but these people are so confident. They were going like anything as usual, KTM rider. Very narrow pass. Road is free because somewhere they are stuck. Yeah, here we came, and they are still cleaning. See the snow, it's very fresh snow, and you can see the bulldozer in front of us, which is still cleaning this area, and I see need to push because it's skidding. Wheel is moving hard snow, just cleaned, and we are going on this very hard snow, and vehicles are not, he pushed my vehicles also little bit, my bike, then only we could move. And I saw that one rider in front of me, his bike was skidding like anything. He was just managed to not hit the truck. So you can see now bike is going left right. It's a so dangerous situation. But in such condition, it is always advisable that one person is riding, another person is little bit holding and pushing the bike, because it's a matter of maybe 50 meter, 100 meter, and if something goes wrong, it will be more serious and dangerous. So now looks like this bike will skid because it is already making a different angle. And I was watching this person and saying that how he is doing. He was little bit looks like giving more accelerator, and that's how it was skidding, because in such situation you should be very soft on your accelerator, and front braking totally no. This goes like this. And Pushkar bhai was there, so
he maybe messed up with Pushkar also. See, bike turned completely and not going further, and he will go and again the bike will come. Oh God! See, bike came. Oh, see, is skidding to the right nicely. Chalo, what to do? This is the experience, and I have seen many videos of big cars that in snow they are out of control. You are helpless. Such a beautiful big cars, costly, and just going boom, 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 boom here and there. I mean, this is such a loss. But those adventure seeker, they don't care about this. They go and experiment with their car in snow. See, so thick layer of snow. But this, I followed this track because somebody made, or maybe that machine itself which was clearing made this track. So I was just simply quietly following this track slowly, and this was a place. I mean, we held up here for almost 2 hours like this only, and we are on top. And I have seen the some people in car, they were not feeling comfortable. They were using oxygen cylinder and all. Are baba, very difficult for people to stay. Even a healthy person is not comfortable in such a climate, cold and less oxygen. So what to tell about people with some conditions. जब भी आओ यहाँ पर थोड़ा सा तैयारी करके आओ. You should be brave enough, strong enough to bear all these things. See. Thanks for watching. Please subscribe to my channel.